Okay, so GS paper 1, India and World Geography. GS paper 3, Disaster Management. Agriculture. Okay, so all of you have been to the main examination question papers or not? किसने किसने देख लिया? जिसने नहीं देखा है वो वर्चुअली यहाँ से हम इमोटिकॉन भेज रहे हैं थप्पड़ का. So yes, Nakul was saying in last class कि ma'am there is only one question from the topic you have taught us, that why India is called as the subcontinent in detail. Nakul, there are, yeah, you said na ki the subcontinent question is asked in the exam. Is it? Then who said that yesterday? 4 questions कौन कौन से अभी attempt हुए हैं? Okay, so first question, India is considered as a subcontinent. Elaborate your answer. Very basic question from geography. सबसे easy सवाल पूरे पूरे GS पेपर का. सब अगर हम सारा कंप्राइज कर दें, है ना? सबसे पहला सवाल जो मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक से आया, दैट इज इंडिया इज कॉल्ड अ सबकॉन्टिनेंट. वी विल डिस्कस डेफिनेटली ऑन द क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, अभी मैंने माइनिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया नहीं है, हम लोग अभी इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ेंगे. तो जो सेकंड क्वेश्चन आया, दैट डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, its mining industry contributes much less to its gross domestic product in percentage. Discuss. This question we are going to tackle when we will discuss the resource management and economic geography. ठीक है? Yeah, okay. हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, there is a bunch of messages. I am very happy that all the questions, not only one question COP26, the question from green grids is also been asked, Nakul. ग्रीन ग्रिड का सवाल जो था कि वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड, कैसे इस पर पूरे वर्ल्ड का जो है एक डिस्कशन होना चाहिए, एक पैनल है, किसने सबसे पहले इसको शुरू किया. वी हैड डिस्कस दैट आल्सो. ओसवॉग अंडर द ग्रीन ग्रिड सिस्टम. 2 सवाल COP26 से आए हैं, दोनों सवाल क्लास में डिस्कस हुआ. डाउन टू अर्थ के आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और PIB से आया. यस, वॉल्केनिक इरप्शंस का क्वेश्चन हम हमेशा बोलते हैं, ज्योग्राफी का कंटेम्प्रेरी इफेक्ट्स वर्ल्ड का हमेशा आउटलुक के साथ देखना है. आई वाज चेकिंग द क्वेश्चन कि what are the recent volcanic eruptions in 2021 and what are the social environmental effects of volcanoes in the regions. So on rounded off 2021 में ही लगभग 46 वॉल्केनिक इरप्शंस हुए. मैंने लिस्टिंग भी शायद आपको एड में दिया, edus.volcano.erp पे इसका पूरा लिस्टिंग है, कहाँ कहाँ पे आया. कैनरी आइलैंड के बारे में डिस्कस भी किया था कि कैनरी आइलैंड स्पेन किस तरीके से पूरा कोरोड हो गया, माइग्रेशन हुआ, लोगों की जानें गई, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक हरासमेंट्स हैं, है ना? तो बहुत सारे सवाल ज्योग्राफी से आई एम वेरी हैप्पी GS पेपर 1 और GS पेपर 3 में आए हैं, अब तक के टॉपिक से आए हैं. सो आई एम so happy and delighted in saying that the pattern I am following, with not going to the old school method of teaching geography, but implying the correct tools of introspecting yourself to write the answers, because the pattern UPSC has changed in previous 3 to 4 years is contemporary. When I was taking your orientation class,
I think 2 or 3 times I mentioned that key concept plus contemporary issues are the only keyword to tackle the main examination. And if you are preparing for your main examination, pre-examination is just a ladder to cross away because you are crossing the mountain, right? So I was just checklisting the questions of GS paper 1 and 3. अब जब भी हम नेक्स्ट बैच का ओरिएंटेशन लेने वाले हैं, GS पेपर 1 और 3 मिलाकर 18 questions. 18 questions from GS paper 1 and 3, geography and hybrid topics of geography. हाँ, GS पेपर 3 का जो लैंड रिफॉर्म का सवाल था, when I saw and I went for the analysis, I was talking to our director sir, Dr. Bajpai, and I was laughing out loud कि sir I was just teaching them land reforms. मतलब हम ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी और पॉलिटी को जो मल्टी लिंकिंग का प्रोग्राम के साथ बच्चों को पढ़ाने का कोशिश किए, वो मेरा सक्सेसफुल है. एंड आई एम गोइंग टू डू दिस system of teaching, the mechanism of teaching to students in the same way. Land reform पे सवाल आया, earthquake पे सवाल आया है कि कैसे earthquake से और सारे disasters आ सकते हैं. Already taught landslide is one of the disaster, tsunami is the disaster. Previous 30 मतलब 30 सालों में, 3 decades में किस तरीके के और disasters आए हैं, right? So जितने भी questions थे multi linked, मतलब आप you cannot rely only in the domain of geography. So let's discuss some background at how this main examination questions are asked. Multi-linked with geography and other dimensions of the subject. कहीं पे sociology भी added है. एक सवाल है, उसको हम बता, I should read and then we should discuss that how it is linked with sociology. One question, that how did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? Already discussed कि land as the asset should be given at the minimal boundary line to every person, every family, right? But in some parts it is being taken care of, but in different parts it is not. So some parts were Karnataka, केरला, so their land estimation is improved, वहाँ के जो farmers हैं वो poor नहीं रहे, है ना? But still in Bihar the fate is not worked in the way, and there are many landless farmers who are working as a tenant, right? Sociology, agriculture, दोनों सवाल. Sociology, agriculture, geography का hybrid topic है agriculture. इसमें socio-economic condition की बात है, तो sociology भी added है, प्लस इकोनॉमी भी एडेड है, प्लस हिस्ट्री भी एडेड है. क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो लैंड के साथ दिक्कत क्या है वो हम हिस्ट्री में जाके जानेंगे. कितने तरह के लैंड लैंड डिस्प्यूट सिस्टम्स थे इंडिया के, व्हाट वर द लैंड डिस्प्यूट सिस्टम्स ऑफ इंडिया. सो हाइब्रिड टॉपिक्स एंड मल्टी लिंकिंग क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय यूपीएससी. एज आई सेड कि सिर्फ और सिर्फ एक विषय तक निर्धारित रहना जरूरी नहीं है. यू शुड नॉट बी इन द सर्कल इम्बाउंडेड विद ओनली वन सब्जेक्ट डोमेन, है ना? एक और सवाल जो कि आई लाइक्ड, यस, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक implications arising out of the development of IT industries in major cities of India? Detail. ज्योग्राफी के, अर्बन ज्योग्राफी का सवाल जो मल्टी लिंक्ड है सोशियोलॉजी और इकोनॉमी के साथ, है ना? मल्टी लिंक्ड विथ ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, बिकॉज इफ यू आर सीइंग द सिटीज, so we have to see the cities in the economic parameter. Economic geography is coming there, economics is coming there. अब इंडिया में almost 42 cities हैं जो कि IT hubs बन रहे हैं. So how the pattern of the city is changing? So the pattern of city is changing by society development, apartment development, और IT parks बन रहे हैं, cyber parks बन रहे हैं, migration है,
स्मॉल सिटीज में भी जॉब ओरिएंटेशंस है, पीपल आर गोइंग फॉर आईटी वर्क्स, सोसाइटी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, इम्प्लीकेशंस क्या है आईटी डेवलपमेंट का, है ना, मेजर सिटीज में. सो यू आर सीइंग द नोएडा साइबर पार्क, यू आर सीइंग गुड़गांव साइबर पार्क, यू आर सीइंग फरीदाबाद साइबर पार्क, एट द सेम टाइम भोपाल इज इमर्जिंग एज अ साइबर पार्क, right? So these are the good implications. Now poor implications, sanitation problem is a poor implication, pollution, automobile industries are increasing, that is also the major root cause of pollution there in cities. Growing with pollution, the burden of people, resource management orientation, बारिश आती है रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, traffic, water logging. Why? Because the city is enlarging, not developing. So there is a concept debate between development and enlargement. जैसे तैसे सूडो कॉन्सेप्ट में शहर का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं है इन प्रोस्पेक्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम. सो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के हाइब्रिड टॉपिक्स थे था जो कि सोशियोलॉजी इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट किया. One of the important question that how do the melting of Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather patterns and human activities on the earth. यहाँ पर relief feature is a main issue. Arctic Circle is in the high elevation area, right? It is a glacier. Arctic is a glacier in the high elevated area. Antarctica is a plain ice cover sheet. Arctic Circle has bunch of ice cover and bulk of ice cover than Antarctica. If Antarctica will melt, what will happen? There will be rise in sea level. But if Arctic Circle is going to melt, the climatic, you can say the modulation of the world is going to change very, very, very drastically. Because that elevation of glaciers are not only keeping the water level at its maximum, but also not allowing the temperature to raise in such a manner. So यहाँ पर दोनों की रिलीफ फीचर को थोड़ा समझ के लिखने की बात थी. ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटिक इश्यूज हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ, यस, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज और वेदर पैटर्न को आर्टिक और अंटार्कटिका की मेल्टिंग ग्लेशियर्स अलग अलग तरीके से, आर्टिक का कैसे करेगा, अंटार्कटिका का कैसे करेगा. अंटार्कटिका का उतना ज्यादा नहीं करेगा एज कंपेयर टू आर्टिक, बिकॉज आर्टिक इज कनेक्टेड टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. द 3 मोर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू आर्टिक सर्कल, राइट. ये क्वेश्चन आ रहा है आईपीसीसी के रिपोर्ट से, जहां पर दोनों ग्लेशियर्स के मेल्टिंग पैरामीटर्स पर बात की गई थी, किस तरीके से हो रहा है, how it is turning bad for people, how the island countries is going to be drowned. Briefly, the question number 5 of GS paper 1, briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on local weather conditions with example. 250 word, 250 words, only the biggest mountain range of the world you can take as example. Andes, Alps, हिमालयाज. इसके आसपास का वेदर सिस्टम कैसा है, हाउ द वेदर सिस्टम आर अराउंड दीज माउंटेन एरियाज. हिमालय का तो पढ़ाया है इतना प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ दैट हिमालय इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ dividing the Indian subcontinent from the temperate, dry, chilly wind and summer climatic region. Second, stopping the monsoonal wind, है ना. तो it is acting as a building block. So the impact and the weather condition on the mountain range of Himalaya is cold, is subtropical. In India, at a time of 3 months, it is monsoonal because the monsoonal winds are prevailing nearby Himalaya and stooping ahead. In Alps also, nearby Alps, the weather condition is in the elevated area is cold. It helps in the drainage pattern of many rivers. Why? Because rain happened, ice glacier crescents
on the cones of Alps and Andes? Yes. So over and all, the mountain climatic region is similar, and the local weather is similar if the mountain is somewhere. Rainfall hoga in the front side, back side there will be no rainfall. Elevations पे क्या है? Winter season है, hill stations होंगे, है ना? Rainfall होगा, अलग अलग जगह पे, तो ड्रेनेज पैटर्न है, नदियां बहेंगी. नदियां है तो कैसा है वहां का? पूरा पूरा ह्यूमन इंटरवेंशन, पीपल आर लिविंग बिसाइड्स, राइट? तो ये सब मल्टी कनेक्टेड रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. मल्टी-डायमेंशनल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल. रिसोर्स जैसे ही पढ़ने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. आई वाज जस्ट लाफिंग कि I have not completed the whole syllabus of geography. Otherwise, the questions are really good. So, the multi-dimensional implications as in कि किन क्षेत्रों में जो पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल है वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है. कहीं पे है तो यूटिलाइजेशन नहीं है, कहीं पे जितना है उससे कई गुना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, राइट? तो उसका मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन कैसे है? एक केस स्टडी लेते हैं वेनेजुला का. So you all are being aware of Venezuelan crisis, the civil war inside the country. All of you are aware of the situation there. Venezuelan crisis is one of the prominent crises that has a prerequisite reason of its petrol. It is not more developed, but one of the largest petroleum exporter of Western Hemisphere. So what happened that Venezuela has become the you can say the usability bag for other developed countries to use the petroleum power by collapsing the country's polity and political assurance and governance. तो पहला मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन में एक होता है डिस्प्यूट एंड दी डिसमेंटलेशन ऑफ गवर्नेंस, ये हो रहा है. दूसरा, देयर इज ऑलवेज इंटर बॉर्डर competition or inter-border war. In Middle East, let's take example of Middle East. Middle East में there is always dispute between Iraq and other countries. Is it? Because of petrol, right? Soviet Union, Russia has potentialized itself in increasing its potential of petroleum and mineral oil to compete the race of the world. Yet it is not achieving the way USA is doing. There is a dispute of power, multidimensional approach mein, dispute of power by the shareholding and prospect of mineral oil. Africa, more of the content in Africa of petrol, crude oil, gas is there, but there is no accessibility. So all the developed nations are trying to do a term that is called neocolonialism. वहाँ पे वापस से कॉलोनीज बिठाना चाह रहे हैं नए तरीके का कि आई एम ल्यूरिंग यू बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यू गिव यू एनर्जी टू अस, राइट? सो ये सारे सवाल हाइब्रिड क्वेश्चंस बने. इसमें से जीएस पेपर 1 से व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट, लेट्स डिस्कस दैट अगेन. अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन व्हेन आई वाज टीचिंग इंडियन फिजियोग्राफी, आई थिंक तब डिस्कस किया था. कब डिस्कस किया था मैंने? स्टार्टिंग चैप्टर्स में इंडियन फिजियोग्राफी के, आई गेस आई वाज डिस्कसिंग दिस. या, सो व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट? इलैबोरेट योर आंसर. सो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया is designed in such a manner that it has the due pattern of a continent. If you see the Youngfold Mountain in the north, northeast, and the ocean in the south, right? It has its neighboring countries, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Pakistan. And in this subcontinent proportion, India accounts for 3/4 land area in this subcontinent. So that's why it is Indian subcontinent. Second thing,
India counts 2.4% land area of the world, means 13 times more than England, of course, Britain. It is also count as the subcontinent because of its distinct cultural boundaries, physical boundaries. हर एक तरह का लैंडस्केप है यहाँ पर, पहाड़ भी है, नदी भी है, खाई भी है, समुद्र भी है, पठारें भी, प्लेटूज भी हैं. So every distinctive landscape you will find in India. Right? So ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आया. ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे ज्योग्राफी के बुक्स में भी है. सो कहीं बाहर से नहीं आया है, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक्स ऑफ ज्योग्राफी, चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ यू स्टडी ज्योग्राफी. राइट? सो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था जीएस पेपर 1 का, आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव बीन अटेम्प्टेड इट, दोज हु आर गिविंग द मेन एग्जामिनेशन. Because if you are studying geography thoroughly and you are not aware of why India is called a subcontinent, then there's no matter of wasting your time. Right? So this was a direct question. One more question. That is hybrid topic of geography, yes, because जहाँ पे भी global शब्द use हो रहा है वो globe से आ रहा है. Somewhere or other the hand, the geography is somewhere in the question. So I'm trying to convey you that geography is everywhere multi-linked with all the topics of UPSC syllabus. So the question is, why is cryptocurrency? What is cryptocurrency? बिल्कुल ही तुम्हारा इकोनॉमी और सॉफ्ट करेंसी का पूरा पूरा टॉपिक है ये. दैट्स नॉट इन द मॉड्यूल ऑफ ज्योग्राफी, बट इट इज कमिंग हियर. हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी? So global society में cryptocurrency is affecting the developing countries because developing countries capital asset is more in the form of indirect form. Cash ज़्यादा होता है, soft economy यहाँ पर नहीं है. They are not reciprocating towards soft economy. They are not aware of cryptocurrencies. Right? Has it been affecting Indian society also? यहाँ पर sociology है कि if the development is the parameter globally, then what is the development standard of India in understanding and accepting and assimilating cryptocurrency? So here is sociology also, right? So all are multi-linked. Okay. So from GS paper 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So there are 11 questions from the direct topic of geography in GS paper 1. इसमें से question number 4, volcanic eruptions and the impact in regional environment, I have discussed in the class. Mining के सवाल पे I haven't discussed, अभी syllabus नहीं हुआ है. Differentiate between the causes of landslides in Himalayan region and Western Ghats. ये landslides जब पढ़ा रहे थे तो उसके causes को I have discussed. But there the question is asked that differentiation, मतलब कि why the landslides happen in Himalayan region, what are the causes and the causes of Western Ghats. So 29th July, the newspaper is flooded with an article this year only. Why I say कि if there is any disaster management issue in India, go and read the article. 29 July 2021, when I was not teaching you, हम पढ़ा भी नहीं रहे थे आप सबको ज्योग्राफी. आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू ज्योग्राफी फ्रॉम सितंबर, आई थिंक, है ना? तब कोई और क्लासेस चल रही होगी. बट बिफोर टीचिंग यू, द आर्टिकल वाज इन द पेपर हिंदुस्तान टाइम्स and Indian Express as well, that Western Ghat is the districts of Western Ghats, Ratnagiri, Samagar, and or one more also. So these 3 districts are facing extreme landslides. Why? Because of heavy rain first. Second, anthropogenic activities. What are these anthropogenic activities in Western Ghats? So the reasons were landslides in Western Ghats. So if we see the vulnerability risk zone of
landslides in India. So in the risk 1, मतलब सबसे अधिक risk जो है वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? So 1 is your Himalayan region. Second, Nilgiri. Third, Western Ghats. Right? So these are the 3 high risk zone of landslides in India. So what happens? In Western Ghat, landslide occurred mostly due to anthropogenic activities. Anthropogenic activities means human activities. Means construction of roads, right? Houses on the slope, making the plateau region clear for agriculture, and above all, heavy rainfall or flash flood. Heavy rainfall or flash flood is one of the prominent reasons for the landslide in Western Ghat. In Himalaya, rainfall, yes, of course. Tectonic activities. What is this tectonic activity, students? Already discussed when I was teaching you Himalaya. Is Himalaya expanding every year? Is Himalaya growing every year? Yes. So the disturbance of plate is happening beneath Himalaya. Sometimes it what? Leads to the dis-eruptions of slope, leads to landslide. Right? Second is your heavy rainfall there as well. This heavy rainfall acts as a geomorphic process, occurs landslide, and if the landslide is full of soil, it is called solifluction. So in Western Ghats, solifluction also occur. मिट्टी का पूरा पूरा क्या होता है? बाढ़ आती है. That is also a form of landslide. Land is sliding itself, shifting itself, whether in form of pebbles, rocks, or in form of soil. Right? So ये question बहुत अच्छा, मतलब if you are studying the patterns of landslide by zone wise and reading newspaper of course क्योंकि वेस्टर्न घाट पे इसीलिए सवाल आ गया क्योंकि अभी अभी हुआ जुलाई के महीने में. So I hope you are getting it that your current affair knowledge with the concept is very much into the topic. Otherwise you will less with the content. और देखो वर्ड्स कितने हैं, 150 शब्द में सवाल का जवाब खत्म करना है, तो उसमें एक मैप भी बनाना है. मतलब ज्योग्राफी के साथ यू हैव दिस बेटर अप्रोच दैट ड्रॉ अ मैप और फ्लो चार्ट एंड दी वर्ड्स. जरूरी नहीं 150 शब्द मतलब 150 शब्द. Target is your 100 to 120 words, concrete, beautiful answer. Leave 30 words. Make a map there. So you have to de-junction your words in writing. That's why every other class I was saying that please practice the main examination questions. This is going to boost your knowledge. क्योंकि आप लिखोगे तो सवाल सर्च भी तो करोगे कि अच्छा ये सवाल कहाँ से हम रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं. रिसोर्स पढ़ोगे भी आप लोग. रिसोर्सेज पढ़ने पे आपको 10 और चीजें इंफॉर्मेशन की मिलेगी जो शायद मैंने क्लास में नहीं बताई, छूट गई. So when you are preparing a whole question, holistic question, you are referring other references as well, which definitely is going to enrich your knowledge and content. Next question from population is coming from human geography, is discuss the main objective of population education and point out the measures to achieve them in India in detail. पिछले महीने का एक आर्टिकल
पिछले महीने का सेंसस ऑफ इंडिया का एक पूरा तुम्हारा एक छोटा सा रिपोर्ट दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। सवाल वहीं से आ गया कि मेन ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, व्हाई वी नीड टू give it, what are the main objectives of it, how we can achieve it in India detail, because population growth is a challenge in disguise for the country. UPSC has asked it, so it has sociology as well, sociology and geography both in the hybrid connected topic in this question especially. So yeah, 11 question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 questions from GS paper 1 is from geography and hybriding geography. GS paper 3, let's come forward. So in GS paper 3, the first question that has been asked is how did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? 150 words only. Land reforms, किन लैंड सेटलमेंट एक्ट्स पर हुआ उनको एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दे, रैयतवारी, महलवारी, परमानेंट सिस्टम्स कहाँ पे थे उनको, देन किन किन पार्ट्स में रिफॉर्म्स ने बहुत रीऑर्गेनाइज तरीके से काम किया. सो महलवारी रैयतवारी सिस्टम इन साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया. बिहार, बंगाल, यूपी is still fragile with the corruption of land system, but these parts where the land are being arranged in typically manner of reforms, these areas where the farmers are affiliated with the specific hectare of land and they are growing on their own land. I was not telling this in class? क्या ये पढ़ाया नहीं था? अभी ही I am taking to see the video as well when I was teaching you land reforms. बहुत बड़ा time मैंने land reforms को पढ़ाने में invest किया. Why? Because of course my mechanism of teaching is not only to geography. I always wanted to give from geography the dynamics of this and the beauty of this subject. कि geography is going to connect you from society, from economy, from polity, from IR and different other aspects as well. So next question is again, I was discussing water crisis, stress, scarcity, deficiency, इन सब पर बात की थी. यहाँ पर इंडियाज वाटर क्राइसिस टॉपिक पे सवाल पूछा गया, हाउ और कितना एक्सटेंट पे जब हम अपने इरिगेशन पैटर्न को माइक्रो कर देंगे, माइक्रो मतलब ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, इन सब को इंट्रोड्यूस कर देंगे इन लार्ज पैरामीटर्स, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. यहाँ पर जब ड्रेनेज पढ़ रहे हैं तो एक डेटा हमने डिस्कस किया था, 70% ऑफ रेनफॉल्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. क्या मैंने इस डेटा को डिस्कस किया था? बट मिसयूज, नॉट यूजिंग इट, we are misusing the 70% amount of water coming from rainfall. Hence, in the 3 months of rain area, means जितने समय के लिए बारिश हो रही है, we have ample amount of water. But after the post of rainfall in India, what happens? We feel the crisis. Because जितना हमें यूज करना था, हमने क्या किया? मिसयूज किया, ओवर यूज किया. Because that 3 months of rain is for the 12 months, right? So we are not planning the rain budget. हम rain water का budget planning नहीं करते in this country. That how much water we required for different crops. We don't know it, right? So here it is connected with micro irrigation help. अभी agriculture में पढ़ाया था मैंने drip irrigation और sprinklers. So this technique of micro irrigation, whether it is drip irrigation or sprinklers, is going to reduce the 70% uses of irrigational water in form of misuse or overuse. How it is going to help? We can manage this water in some other activities. Right? For domestic supply, for industries, for keeping it safe for some dry months,
Now, the next question asked in GS paper 3 is from climate. COP26 पे ही पूरा पूरा climate का सवाल इस बार का रहा. Yes. I was just showing you this article down to earth 1 to 15 दिसंबर 2021. हालांकि जो यूपीएससी मेन का सवाल है वो अक्टूबर में ही बन गया होगा, लेकिन नो आई थिंक दिसंबर 1 और 2 तक बना होगा, बट पूरा दिसंबर मंथ इज नॉट बीइंग इन्वेस्टेड इन, बिकॉज इफ द एग्जाम इज इन जनवरी दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द क्वेश्चन इन दिसंबर. सो दिस मैगजीन हैज 2 questions directly from the topic explain the purpose of the green grid initiative launched at World Leaders Summit of COP26 United Nations Climate Change Conference in Glasgow in November 21. When was the idea first floated in the International Solar Alliance ISA? पहला सवाल. इसी का दूसरा सवाल, describe the main outcomes. Like first question from GS paper 3 is asked in GS paper 3. The question number 6, extended question from this topic only, COP26 summit. Second question from question number 17 is describe the main outcomes of 26th session of the Conference of Parties in COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, the branch of United Nations. What are the commitments made by India in this conference? I was not explaining this in the class when I was teaching the climate, Indian climate. उसी टाइम पे डिस्कशन हुआ था पंचामृत पे, उसी टाइम पे डिस्कशन हुआ ग्रीन ग्रिड पे. सवाल ये दोनों वहां से आ गया जीएस पेपर 3 में. Because I was telling you that climate is a very dynamic and broad topic. Every year questions are being asked from this topic. 2 questions directly from COP26. One other question from climate is, describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines, AQGs, recently released by World Health Organization. How are these different from the last update in 2005? 2005 में एक update आया World Health Organization का. This is coming from your health. Health is also a domain topic in UPSC. What changes India's National Clean Air Program are required to achieve these revised standards? क्या है इस AQG के published papers? इसका revised standards क्या है? I'm going to discuss this when I'm going to teach you in human geography about some organizations. Some organizations को भी human geography में पढ़ेंगे, WHO, ASEAN, SAFTA, NAFTA, and their bodies, multidisciplinary bodies, जिनके papers कैसे publish होते हैं. So that time I'm going to discuss that, okay, the Global Air Quality Guideline is being published by WHO in every country years, where they discuss about what are the problems recently, how we are going to tackle such problems, and how India is tackling it, not by implanting smoke tower, of course, but in some other manners. Automobile industries को वापस से revise करें B6 मॉडल में, पेट्रोलियम का जो सबसे रिफाइन एलिमेंट है उसको यूज करें अपने automobiles, because automobiles and industries are the most 2 corrupted aspects that are contributing for the pollution in developing countries, right? So yeah, I'm going to discuss this when I'm going to discuss WHO. But ये दो सवाल हैं. Explain the purpose of Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit. Here it is given. I think from the article written by Bhupendra Yadav, page number 12 down to December month. So you can write the article's topic on Google. You will find this article. India's successes at COP26, collaborative. The main theme line is that India should be collaborative. यहाँ पे non-competitive approach can save our planet. That we should not compete from each other in terms of progression and development. Rather, a collaborative value system is being required in this such alarming situation. So I'm going to read this article again. That infrastructure for resilient island states IRICH, which will work to achieve sustainable development through systematic approach
A major boost for India initiated International Solar Alliance, ISA, who came when US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry announced at COP26 that US has joined ISA as a member country. So who has initiated ISA for the first time? यहाँ पे एक सवाल है, यूपीएससी ने अलग से इसी सवाल में पूछ दिया, यूएनएफसीसी के सवाल में ही, सॉरी ग्रीन ग्रिड लॉन्च के सवाल में, that when was the idea first floated with International Solar Alliance? Yes, it was with the US special meeting going on along with, because everything is mentioned in the article, the question is coming from this article only, Presidential Envoy of Climate Change. And then the all members are rose to 101. So when the meeting was happening with the US presidential meeting conventions of COP26, backdated, I'm not recalling the year, but I think 3-4 साल पहले, yeah, Nakul, yeah, 2015. So that time there was a huge topic that what is this ISA, Solar Alliance का क्या progression होगा, किस तरीके से solar contemplatives are going to work in terms of revising the energy pattern uses in India. So India में बहुत जगह पे solar panels भी लगाए गए from the government side. In fact, in Lodi Road, the biggest in your habitat center, in that year only, under the program scheme of your International Solar Alliance ISA. I recall I was in my college time. So that time the summit was taking place. So that time only, India also launched Green Grids Initiative. So question is here, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को वापस से टेबल पे रखा गया नवंबर में 2021 में इंडिया की तरफ से. द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव कम्स विथ वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रीड, ओसवॉग. वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन greed. I have already discussed is in the class of climate in the part 3 that India with other countries combinedly going to act on this substitution of energy. Yes, solar subsidy is also in the list of government's activity that is going to be taken care of. Now, COP26 was successful in alerting that how the situation is alarming. India was one of them. India said the situation now is under the progression of collaborative approach. So यहाँ पे green grid के बारे में explain करने के बाद, OSWOG को explain करने के बाद, who has started or first floated the International Solar Alliance को explain करने के बाद, सीधे आ जाओ नीचे क्वेश्चन नंबर 17 पे, डिस्क्राइब द मेन आउटकम्स ऑफ 26 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ सीओपी. फर्स्ट, रिकवरी ऑफ जीएसजी गैसेस, हाउ वी आर गोइंग टू रिकवर एंड रिड्यूस द यूज ऑफ जीएसजी गैसेस. उसमें से भी मिथेन वहां पे टेबल टॉक रहा. मिथेन वाज द फर्स्ट टेबल टॉक, that how we are going to reduce methane. Second was revising the carbon credit emission from Kyoto Protocol. जब Kyoto Protocol बना था तब carbon emission पे काफी बात हो रही थी, that how we are going to curb the carbon emission. Many developed countries didn't came up to curb the carbon. So we need to revise this. The outcome. Second, revision of Paris Agreement. So Paris Agreement का revision भी वहां पर एक बहुत बड़ा debate discussion था, that how the articles are going to process that countries are strongly encouraged to contribute towards the resources we are not fossil, right? Then एक सवाल इसमें added है, 250 वर्ड में ही लिखना है, ज्यादा लिखना भी नहीं आप लोगों को. What are the commitments made by India in this conference? 250 words. Both the questions are combined. Outcomes क्या है COP26 समिट के, इंडिया का contributions क्या रहा? So इंडिया ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया. क्या था वो पंचामृत का कॉन्सेप्ट और क्या था उसका कंट्रीब्यूशन? कमिटमेंट, सॉरी कमिटमेंट्स पे है सवाल, कि इंडिया विल ब्रिंग इट्स
non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. First commitment. Second, India will bring its economy's carbon intensity down to 45% by 2030. Third question, India will fulfill 50% of its energy requirement through renewable energy by 2030. Every vision is for 2030. Next, India will reduce 1 billion tons of carbon emission from total projected emissions by 2030. जितना अभी तक प्रोजेक्ट किया उससे भी 1 बिलियन और कम हम प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक. So these are the प्री बाउंड्री टारगेट्स. जितना बाउंड्री लाइन है उससे भी पहले हम टारगेट को कम करेंगे. लास्ट वाज इंडिया विल अचीव नेट जीरो बाय 2070. These were the commitments by India by the words of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Right? Then this, yes, Oswald and green grids. Then there was India's request to other developed countries to contribute the economy in trillion for environment and the savage. So, everything was discussed in the class, meanwhile teaching you all. And my, of course, danda and everything was ki please write for the main examination. If you're not going to write it now, then it is not going to help you out. Have you seen the essay questions? They were philosophical, oriented to your temperaments, not your knowledge, that how you look the society, how you look the development, how you look the progress, how you look on the matter of research, how you look on the matter of history. So everything is coming from the practice of writing. अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पॉलिटी रिलेटेड टेम्परामेंट्स हमारे ठीक होंगे, आईआर रिलेटेड ठीक होंगे. ज्योग्राफी के कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से भी आईआर का टेम्परामेंट ठीक होगा, सोसाइटी का टेम्परामेंट ठीक होगा, अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट का टेम्परामेंट हमारा ठीक होगा. उसके कॉन्सेप्ट्स को हम और पढ़ पाएंगे. लैंडस्लाइड पे एक और क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में है और यहाँ पे अर्थक्वेक पे भी पूछा गया है. लेट्स डिस्कस दैट एज वेल. The vulnerability of earthquake, I guess. No, first, the question is from landslide only. Question number 18. Describe the various causes and effects of landslides. Very typical straight question. Various causes है, effects क्या होता है landslides का. Do I need to share this again? Causes and effects of landslides. Causes are rapid construction on the slopy areas, flash flood, rainfall, anomaly of slope, right? Bluffing, agricultural land formation, these are the causes. Deforestation, of course. And then what are the effects? Effects are very disastrous, like collapsing of human settlements, blockage of roads, diversion of paths, blockage of bridges, destruction of dams, diversion of river areas, and so on. Mention the important components of national landslide risk management strategy. Very straightforward question from your mitigation and management strategy. तो एनडीआरएफ की साइट पे ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट्स के मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं. एनडीआरएफ की साइट से यू कैन गेट दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. लैंडस्लाइड पे 2 आ गया, एक हिमालय पे, एक जीएस पेपर 3 में. यहाँ पे लगता है दोनों के क्वेश्चन सेटर्स आर सेम. जिन्होंने भी सवाल सेट किए हैं पेपर 1 पेपर 3 के सेम ही है. वहां पे भी लैंडस्लाइड पे सवाल है, यहाँ पर भी है. सो जस्ट सी दैट हाउ द टॉपिक्स आर मल्टीडिसिप्लिनरी. होप अब सवाल देखने के बाद थोड़ा बहुत मेरे बातों को सीरियसली लोगे आप लोग, या अभी भी ऐसे ही है कि नहीं मैम तो ऐसे ही बोलती हैं. एक और सवाल
डिजास्टर मैनेजमेंट पे ही है, अर्थक्वेक हमने पढ़ा है ना, इंडिया के जोन्स को भी डिस्कस किया था। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स। तो इंडिया पहले तो अर्थक्वेक में कहाँ कहाँ पे वल्नरेबल है, जोन नंबर 3 दिल्ली एंड इट्स एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, हिमालयन रीजन्स एंड योर वेस्टर्न घाट्स, yes of course, then your Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island, these are in the vulnerability zones of earthquake. Related hazards क्या क्या है यहाँ पर? Related hazards लैंडस्लाइड है, सुनामी है, सॉइल इरोजन है, स्लाइडिंग ऑफ डैम्स है, डैम खिसक जाता है तो फ्लड, फ्लड इज ऑल्सो रिलेटेड हजार्ड, राइट? So these are the related hazard of earthquake. Give example including salient features of major disasters caused by earthquake in different parts of India during 3 decades. 3 decades में earthquake जितने बार भी इंडिया में आया, connected disasters क्या था? मुंबई टी सुनामी 2004. Anybody remember that? So tsunami, of course, we include T, but it's a silent word, tsunami. I'm using it because I don't know if you're knowing it or not. So Mumbai tsunami is the related hazard of earthquake that occurred in where? Arabian Sea. Earthquake in the parts of Himalaya in Nepal occurred many landslide activities and cases in Sikkim as well, in northeastern hilly areas as well. So these are the case studies that you need to show in the last 3 decades, that what are the related hazards. फायर आ जाता है, अर्थक्वेक अगर हो रहा है तो नीचे के अर्बन एरियाज में किस तरह के हजार्ड्स हैं, तो फायर है. हाउ इट इज गोइंग टू टेक इन, बिकॉज if the earthquake is coming, the poles will misfunction, underground wires will misfunction, they will connect with each other, and what will happen? Short circuit, electric fire, poles will downfall on the roads, again current, death by current. So these are the related hazards. Kitne bhi hazards you can just interlink with earthquake, and it happened in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम पे हमने डिस्कस किया था. रिमेंबर, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टॉपिक्स. Was I not discussing the challenges of Indian agriculture? So this is all we are here. I think I'm teaching you all from September, right? From September 13. From September 13 we are in geography, with the month in January with English medium मेरे classes हैं. So how many on total questions that came in this UPSC main examination? Yet I have not covered the 55% syllabus of you. Because I have only 3 days a class. So let's take that if there are 4 months, I have only taught you 2 months of class. 30 classes. You can say 30 to 40 classes. So hope all of you are aware that how the pattern of questions are and how you need to interlink with the contemporary topics. Right? That's why I have given this 1 hour of my discussion only to the main special examination. किसी का किसी सवाल में कोई डाउट है? इस बार की यूपीएससी के GS1 और GS3 जहाँ पे हमारे हाइब्रिड टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के. Have all of you have seen the questions? Tell me. हर एक सवाल को देखा? Okay, all of you are confident after seeing the questions?
that somehow or the other you all are aware of all these topics, not the of course not the all topics, because I have not taught you resource, I have not taught you yet, अभी तक population पे अभी तक हमने बात नहीं की है, but some of the other जो भी questions जो भी topics हमने अभी तक cover किए हैं, all of you are of course confident enough with geography that yes, I can solve these questions, or I know this topic, oh I have been reading this in the class, and then I go with all the references as well, because my all dedication to my classes is to make you ready for the main examination. If you are detailing yourself with the main examination, pre is not a issue, you will get that definitely for sure. Oh, that's really great, Ankit. कि questions आ रहे हैं बच्चों को, and as a teacher I am feeling overwhelmed that my students are knowing the questions by seeing the UPSC main examination, yet they are not appearing, they are going to appear a year later. But as long as how we are proceeding for the lectures, and I'm so happy and contented. I am also very contented after seeing the questions as a teacher, that I'm going good, I'm doing well with my students. So yes, definitely this is going to work, the multidisciplinary approach with geography, बिकॉज कहीं पे भी इंटरलिंक कर दे रहे हैं ज्योग्राफी को, कहीं पे भी चिपका देते हैं, इसका कोई अपना घर ठिकाना नहीं है ना. So yeah, all that I wanted to discuss on the questions. 18 questions from the topic in this UPSC 21 main examination. Just see the weightage and content of geography in GS papers only. अभी इन्वायरमेंट का हमने टॉपिक देखा भी नहीं, बिकॉज इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ टॉपिक, सो आई हैव नॉट टेकन दी क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वायरमेंट, बिकॉज अभी बायो ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं है मैंने उसको होल्ड पे रखा था फिजिकल ज्योग्राफी में, कि आई एम गोइंग टू टीच इट इन द लास्ट, व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, देन विल सी बायो ज्योग्राफी. तो उसके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी नहीं किए हैं अभी. सो राउंड एंड ऑफ यू कैन टेक लाइक 20-22 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी प्लस हाइब्रिड टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, है ना. So yes, end with the class discussion of your questions of main examination. We will discuss now the class topic, that is your agriculture revolution.